just wanted to update you guys. Uh, I was listening to or overhearing the chatter about the cat experience test series, which is something that we have created this year, 2024. I've created, me and Meenakshi ma'am have actually created that test series for you guys. And from some encouraging chatter, a lot of people who have started taking the test and have actually experienced the test are talking. I saw somebody send me a screenshot with comparison between AIM cats and the cat experience, where they said that somebody, a neutral student, said that I've taken both and I find the cat experience much better than the AIM cat. And that's encouraging for me because of the fact that, as you know, I'm very excited about creating this product and putting it out there. It's like a baby for me. And दूसरा chatter जो मेरे को मिल रहा है, मतलब I don't know what kind of chatter this is, but the chatter is about that 199 में क्या quality मिलेगी, और this is basically coming from people who have not experienced the exam or the test that we are building. So I just wanted to assure everybody out there through this live interaction that देखो मेरा एक simple logic रहा है right from the time I started. I became an IIM graduate, and this also has been true about the last 20 years of whatever I've done. And in fact, this is one of the key aspects of what I tell in my training programs. And that is that, you know, you have to take pride in your work in life. Life में एक basic फंडा होता है कि अपना work में pride लीजिए, and you don't really bother about what you're getting paid for it, or whether you're getting paid for it or not. You take pride in the work you do. Eventually आपके पास लोग मिल जाएंगे, you'll find people, and this is important for your life also, that if you start doing that, you start take pride in what you do, and अपने काम में pride लेना start करो, only for one reason, not because what people are paying you or not because of what you're getting out of it, but because तुम्हारा नाम जुड़ा रहता है हर काम के साथ. तो मैंने अपना जो भी रेपुटेशन बिल्ड किया लास्ट 20 ईयर्स से, इट्स बिन 25-30 ईयर्स, इट्स बेसिकली बिल्ट ऑन दैट लॉजिक ओनली, कि मैं अरुण शर्मा अगर कोई काम करेगा तो अच्छा काम करेगा. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई अश्योर माई सेल्फ. एंड वेदर कुछ भी मैं झाड़ू भी लगाऊंगा तो दुनिया में सबसे अच्छा झाड़ू लगाऊंगा. एंड दिस मैसेज ऑफ एक्सेलेंस गोज़ राइट बैक. मतलब मुझे ये मैसेज ऑफ एक्सेलेंस पहले बार, मतलब आई वाज लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट राइट थ्रू माई स्कूल एंड कॉलेज, और ये मैसेज ऑफ एक्सेलेंस मुझे पहले बार मेरे फेवरेट मेंटर टीचर डॉक्टर प्रीतम सिंह, जो बाद में IIM लखनऊ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट टीचर्स इन इंडिया, IIM लखनऊ के डायरेक्टर थे बाद में, उन्होंने ये बात मुझे, आई स्टिल रिमेंबर 1993 में फर्स्ट ईयर एज अ 21-year-old when I went into my IIM classroom, IIM Bangalore classroom, ये वाली बात स्पेसिफिकली, मैं झाड़ू भी लगाऊंगा तो दुनिया में सबसे अच्छा झाड़ू लगाऊंगा. He used to talk about this in his class, and that's something that I have kind of, and I not just me, I tell everybody to actually create that aspect, कि अपना काम में प्राइड लो, अपना काम को अच्छे से करो, डू बिल्ड एक्सेलेंस इनटू एवरीथिंग यू डू. और एक बार वो करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब आजकल इतना, देयर सो मच अपॉर्चुनिटी अराउंड यू इन द वर्ल्ड कि आउटकम निकलना ही, यू कांट बी, इट्स नॉट लाइक एकलव्य वाला टाइम नहीं है कि तुम बहुत अच्छा तीर चलाते हो तो तुम्हारा थंब काट दिया जाएगा. इट्स नो लॉन्गर दैट सोसाइटी विल लिव इन, राइट. चलो ठीक है, थैंक्स एवरीबडी फॉर या कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, नील, दैट्स वेरी करेक्ट. मोर मॉक्स, देखो मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को एक मॉक बनाने में 20 घंटे मेरे को लग रहे हैं. आई एम टेकिंग 10 hours टू मेक हर वर्बल दिस थिंग. सो वो mindworkzz.in पे जाके यू कैन बाय mindworkzz.in, कैट एक्सपीरियंस सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा गूगल पे, राइट. एंड डिटेल वीडियो तो हर क्वेश्चन का बना ही रहा हूँ मैं. आई एम दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू बी लाइव रेगुलरली बिकॉज थोड़ा बीच में आई गो अवे फ्रॉम द चैनल, एंड I'm going to live, and maybe I'll do some workshops and या फिर टेस्ट में कैसे improve करना है, how to improve your tests etc, your test scores etc. उस पर maybe I'll do a few videos for you guys. But
uh, that's what I came in for to talk about today, and I hope we'll meet regularly. 99.8 के लिए 70 65 70 मेरे मॉक्स में आ रहे हैं. आई थिंक यू विल हैव टू क्रॉस 80 85. 15 मार्क 5 7 क्वेश्चंस और राम पाठक, 5 क्वेश्चंस और पे तुमको इंश्योर करना पड़ेगा. इफ यू कैन गेट 5 more questions underlying, देखो स्कोर तो इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू गेट करेक्ट. सो 5 more questions should do it for you. तो अगर 99.8 चाह रहे हो, 65 70 in my marks is really good. तो around 15 20 marks इंक्रीज करने का कोशिश कर लो एंड यू शुड बी गुड. और एक चीज़ ज़रूर मेजर करना जब ये मॉक्स का स्कोर एनालाइज करते हो, जस्ट मेक श्योर यू मेजर वन थिंग कि अगर तुम्हारा स्कोर जो भी आता है, सपोज यू गेट अ 50 और अ 40 इन द मॉक, तो अगर टाइम लिमिट हटा दिया जाए और एग्ज़ाम का प्रेशर हटा दिया जाए, तो how much marks are you able to score in that context? No time limit and without this thing. So suppose somebody is scoring 100 marks without time limit and without pressure of exam. So you take a mock paper and you take 2 hours to, instead of 2 hours you take 4 hours, and you see how many questions you can get correct in 4 hours. What is your ability, what is your skill in that? तो 4 घंटे का टाइम ले लिया तुमने और देखा कि कितना स्कोर करता हूँ मैं 100 मार्क के 198 198 मार्क्स में से. वो जब चेक किया, देन फ्रॉम देयर यू देन से कि ओके, इफ आई एम एबल टू स्कोर 100 विदाउट टाइम प्रेशर, विदाउट एग्जाम प्रेशर, तो टिपिकली द कन्वर्जन इन योर एक्चुअल स्कोर विल बी अराउंड 60 to 70%. तो so you know I get a 99.97 98 99 percentile every time I take the CAT. वो इसलिए आता है बिकॉज मेरे को अगर 198 मार्क्स का पेपर तुम दे दो, तो मेरा विदाउट टाइम लिमिट आई विल बी एबल टू स्कोर 170 180. तो 170 180 अगर मैं विदाउट टाइम लिमिट स्कोर कर सकता हूँ, तो इनसाइड द पेपर आई विल स्कोर 120 130. दैट्स ऑन अ वेरी गुड डे आई माइट स्कोर 150 ऑल्सो, अगर मेरा दिन चल गया तो. लेकिन मेरा एश्योरेंस है कि 60% तो मैं स्कोर कर लूँगा वर्स्ट केस में. तो इफ आई माई एबिलिटी कि आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस I have the ability of solving 60-62 questions correctly without time pressure, without exam pressure. तो on the day of the exam मैं 45 questions कर लूँगा आराम से. So और वो you get that belief also from there. So that's why this is important, right? So always measure this. कि how much is your score? What is the level of your score in the context of taking the test without a mock, without pressure, without time pressure. How much can you score? So that will be your ability score. और उस ability score का 60% will be your performance score. So you go between the two. You keep rotating between the two. So अगर तुमको तुम्हारा होता क्या है कि as students, most of you what you do is you only check कि mock में कितना score आ रहा है, and you don't check that ability problem. So for a student, let's say there are 2 students who are getting 40 marks in mocks. तो अगर एबिलिटी चेक किया गया दोनों का, तो स्टूडेंट एक्स और वाई, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को सेम ही रहेगा. तो लेट्स से एक्स का एबिलिटी 100 है, वाई का एबिलिटी 70 है. तो वाई का एबिलिटी 70 और वो 40 स्कोर कर रहा है, तो दैट मीन्स उसको अगर स्कोर बढ़ाना है तो उसको अपना एबिलिटी बढ़ाना होगा. ही हैव टू इंक्रीज द एबिलिटी. एक्स को अगर अपना एबिलिटी बढ़ाना है, 100 उसका एबिलिटी है, 40 स्कोर कर रहा है, उसको अगर स्कोर बढ़ाना है तो एबिलिटी बढ़ा के उसका स्कोर नहीं बढ़ेगा, इमीडिएट स्कोर इंप्रूवमेंट उसका परफॉर्मेंस से बढ़ेगा. So he needs to work more on his belief and other things. So that's why it's very important to correlate these two numbers. And unfortunately, most people in their mock test structures don't actually look at both these numbers. They just look at कि mock में कितना आ रहा है. So just do that. तो नारायण, I saw your message. RC में अगर main argument find करने में problem आ रहा है, तो I think you should focus on you should focus on understanding, improving the quality of your understanding of your reading. So try to identify whether it is in certain subjects that is happening. जिस अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रहा है, किसी लैंग्वेज टाइप में ज़्यादा हो रहा है, तो उसका 100-200 आर्टिकल उठा के पढ़ लो, राइट? चलो, तो DILR का एक वीडियो मैंने डाला है फैजन, उसको वॉच कर लो. या एवरी क्वेश्चन द वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल. सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये I take a lot of pride in whatever I do.
मतलब I one of my passions is two games are my passions, tennis and chess. On the tennis court, if I'm hitting a shot, I'm still thinking why can't I hit a shot like Alcaraz or Nadal or Djokovic or Federer. I mean, I don't accept second class from myself. I don't care about what I'm being paid for it. It is just a matter of something that gets into your uh, your blood, and once it gets into your blood, uske baad things take care of themselves. You don't need to bother. Everything's this thing. I now live in a 10,000 square feet house, but there was a time when I was living in a one bedroom flat. So it changes. Everything changes over a period of time. Only thing you need to there are only two things that matter in life: how good you are at what you do. Boss, itna ही matter करता है life में. If you can focus on that in your life, everything will take care of itself. So as you go ahead in your life and build your careers, do two things: identify what is it you want to be known as, what is it you want to be, and then focus on being as good as you can be on that. And so how good you are at what you do, take that excellent message and continue with that. Chalo, thank you so much, everybody. And yeah, pricing. I mean, as I said, my basic thought was that I wanted the test series to be available to as many people as possible, and that's the basic reason I've done this pricing. I really did not want to focus on the revenue we make out of it. So it's just, and as I said, उसको मैं फ्री भी कर सकता था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगेन, फ्री का वो अलग प्रॉब्लम होता है. पीपल देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्री है तो क्या फ्री का मतलब होगा तो बेकार होगा. टू दैट एंगल इज देयर. एंड आई केम अप विद दिस वीडियो बिकॉज आई थॉट दैट ये चैटर मैंने देखा था ऑनलाइन ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में. सो आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट. चलो ठीक है. Thank you so much, everybody. Bye bye. Bye bye, everybody. See you.